Now, the battle for Uttar Pradesh heats up as the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav he files his nomination there from Karhal constituency in Mainpuri district, which is the SP stronghold. Meanwhile, BJP has now fielded Union Minister SP Singh Baghel against Akhilesh Yadav. In fact, Baghel has been UP minister earlier and now he's an MP from Agra. In fact, Baghel will be now fielded by the BJP against Akhilesh Yadav. Baghel has been a minister twice. Now, after filing the nomination, Akhilesh Yadav has said that whoever the BJP files from Karnal constituency is bound to lose. Now, before filing his nomination today, Akhilesh Yadav has met with party workers and his uncle and poll ally, Shivpal Yadav. SP's Sobaran Singh and in fact earlier SP Sobaran Singh had won Karhal seat in 2017 after fetching about 1,04,000 odd votes. Earlier speculations were rife that BJP was planning to field Akhilesh's sister-in-law Aparna Yadav from the Karhal constituency. अगर समाजवादी पार्टी ने अपना नंबर 1 आदमी यहाँ पर लड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोचा होगा। मैं कार्यकर्ता और संगठन की ताकत के बल पर अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, अपने गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सबके बूथ से लेके जो राष्ट्रीय है उनके माध्यम से हम ये चुनाव लड़ेंगे। ये सबके जहन में ये है, अचानक आपने ऐसे नामांकन भरा, कब बताया कि आपको? सबको यही सवाल है सर। आई एम मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। वॉर में सरप्राइज का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगी। जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं लगातार, उन्हें उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को भगाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को उतारेगी वो ऐतिहासिक वोटों से हारेगी। All right, now Akhilesh Yadav is contesting from Karhal constituency. I'm going to give you a glimpse into how Karhal voted so long. In 2012 and 2017, SP won about 19,000 odd votes. In fact, 92,536 votes is what the SP got in 2017. And BJP there got about 13,114 votes. BSP there, 61,593 votes. So this is the comparison that we're showing you between 2012 and 2017. SP getting 92,536, and in 2017 they leaped to 1,04,000 odd votes. BJP with 13,000 initially leaped in 2017 to 65,000 odd. BSP at 61,000 odd slipped to 29,000 odd votes in Karhal constituency. So this is viewed certainly as an SP stronghold. Now, clearly we're looking at a lot of speculation initially that kicked off on Aparna Yadav, who is Akhilesh Yadav's sister-in-law, will be fielded by the BJP against Akhilesh Yadav. But it seems like those speculations and rumors have been smashed by the BJP itself after they have now decided to field Union Minister right opposite Akhilesh Yadav, Union Minister, who is also a minister in the UP government previously, SP Singh Baghel, who's now been fielded against Akhilesh Yadav. Like we showed you, in fact, SP Singh Baghel also has quite some sway in that community, that vote belt. Here is going to be a really interesting fight. Akhilesh Yadav, SP candidate, SP chief there from the SP ticket, and SP Singh Baghel, who's now standing on a BJP ticket against Akhilesh, a union minister and quite a heavyweight from the BJP. Now, meanwhile, Prime Minister's outreach in Uttar Pradesh hits top gear after Narendra Modi addresses a virtual rally there. While addressing a rally, Prime Minister Modi launched an all-out attack on Samajwadi Party. In fact, the Prime Minister began by calling Akhilesh a fake Samajwadi. The Prime Minister also raked up the Western UP riots, alleging that when the riots broke out, the previous government was celebrating. Alleging that Mafia Raj in Uttar Pradesh during the Akhilesh's regime, Prime Minister Modi hailed Yogi government, saying that under Yogi, BJP ruled state, it had finally ended Mafia Raj.
Taking a jibe at Akhilesh's Lord Krishna dream claim, Prime Minister said that those who sleep get dreams all the time and those who are awake make resolutions. मैं कभी कभी सुनता हूं कुछ लोगों को सपने आते हैं। आप सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई? जो सोता रहता है ना उसको सपने आते हैं। जो जागता है वो संकल्प लेता है। योगी जी जागने वाले, जागते रखने वाले और इसलिए संकल्प करने वाले नेता है। एक तरफ भाजपा है जिसके पास विकास का स्पष्ट विजन है, साफ सुथरा, ईमानदार और असरदार नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ अहंकार से भरे, समाज को तोड़ने वाले, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं। और ये है कौन? नकली समाजवादी है। विजन के नाम पर इनके पास सिर्फ विरोध है, गुस्सा है, आक्रोश है। इसलिए आज यूपी कह रहा है एक बार फिर गरीबों की सरकार, भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी, उत्सव। 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा, ये समाजवाद का प्रतीक था। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी। अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था। Now, the fight for Uttar Pradesh gets only bigger as the BJP now sharpens its attack on the opposition. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi are saying that the party cadre in fact, the party eventually cares only about their siblings, their grandmother in Italy when the country faced the pandemic. This is what Yogi's hit out at the Congress party. Yogi has also attacked Mayawati's Bahujan Samajwadi Party, calling the Samajwadi Party a Chacha Bhatija party in reference to Akhilesh Yadav and his uncle Shivpal Singh Yadav. भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। Now, Congress and the BJP are locked in a battle for the city of Noida. Congress General Secretary Priyanka Gandhi they campaigned door-to-door in Noida today to seek votes for the party candidate Pankuri Pathak. This is her first physical campaign since the Election Commission banned rallies. In fact, the BJP has now fielded Pankaj Singh, the son of Defence Minister Rajnath Singh, against Pathak. Singh is the Uttar Pradesh BJP Vice President too. The leader had won the seat in 2017 as well. जनता के सीएम है, कोरोना में बाहर निकले लोगों की व्यथा को एड्रेस किया। लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि कोरोना के समय क्या हुआ। सरकार उनके प्रति आक्रामकता सरकार ने दिखाई, सरकार ने उनको प्रताड़ित किया, उनकी मदद नहीं की, सब जानते हैं। तो मोदी जी कुछ भी कहें, योगी जी कुछ भी कहें, सच्चाई जनता जानती है।
All right, now it's a trailer day indeed today in Punjab's blockbuster. Top guns in the state have today headed to file their nomination. In fact, Punjab Chief Minister Charanjit Singh Channi, who is contesting from 2 seats, fielded himself. He filed his nomination from Badaur seat in Barnala. Channi is also defending his current seat, Chamkaur Sahib, which he's already represented thrice in the state assembly. Now, Badaur is an assembly segment in Sangrur parliamentary constituency, which AAP CM candidate Bhagwant Mann represents. Former Chief Minister turned BJP ally Captain Amrinder Singh has also filed his nomination there in Patiala. Captain Amrinder Singh took the blessings from the sword of Guru Gobind Singh before heading for filing his nomination from Patiala. Now, also the nomination centres. At the centres, there were also Akalis. Party President Sukhbir Singh Badal, Prakash Badal filed their nomination papers from Jalalabad and Lambi constituencies respectively. मैं एक मिशन लेके मालवे दे विच आया। मिशन ये है कि यह एरिया बहुत बड़ा, कई जिले डेवलपमेंट पक्षों पिछड़े हुए है। भावें कैप्टन साहब भी रहे, बादल साहब भी रहे, लेकिन इत्थे डेवलपमेंट नहीं हुई, एरिया पिछड़िया होया। मैं इस एरिए नूं पूरे नूं उपर चुकना है। मैं सदामा बन के आया, मालवे वाले कृष्ण बन के सामण गए ते असीं बड़ी भारी जीत पूरे मालवे चों लवांगे। चरणजीत सिंह चन्नी के आने से चुनौती उनको है या आपको? चरणजीत सिंह चन्नी के आने से चुनौती उन्हीं को है जी, क्योंकि हमारे हलके के लोग हमेशा बदलाव का हिस्सा बने हैं। 1952 में पहली इलेक्शन लड़ी गई थी पंजाब की। यहाँ हमारे भदौड़ से भी जो कैंडिडेट थे, एक तरफ तो राजा नरपाल सिंह थे और दूसरी तरफ थे बाबा अर्जन सिंह। जो राजा नरपाल सिंह थे वो महलों के लोग थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी उनके पास, और जो बाबा अर्जन सिंह थे वो जो हमारा व्हीकल होता है ना किसान का, मतलब उस पर काम करते थे। तो लोगों ने उनकी इलेक्शन लड़ी और बड़ी लीड से बाबा अर्जन सिंह जी जीतकर उन्होंने इतिहास रचा था। सो हमारे भदौड़ से ये इतिहास है कि ये लोग एक बदलाव के लिए वोट करते हैं। तो इस बार बदलाव के लिए इस बार भी वोट करेंगे, क्योंकि पहले 3 बार भी की है। और अभी चरणजीत सिंह चन्नी के आने से चुनौती चरणजीत सिंह चन्नी को है, आम आदमी पार्टी को नहीं। Now, other than the Punjab Chief Minister, Captain Amrinder Singh was also one of those heavyweights who came out to file his nomination, and Badals also filed their nomination papers. These are visuals that came in from today, right from the start of the day. You had all the top guns in Punjab politics coming out to file their nomination. It's a big blockbuster indeed, expected. Very interesting election in Punjab, undoubtedly, with many more players in the political fray. पंजाब में ऐसे कभी नहीं हुआ पहले। सो फ्रैक्चर होंगी, डेफिनेटली होंगी। छोटी पार्टी हंग असेंबली की तरफ जा रही है, अनलेस लोग समझें इस बात को कि पंजाब को सिक्योर गवर्नमेंट की ज़रूरत है। और बीजेपी आज अगले 7 साल गवर्नमेंट में है, 2 साल तो ये और फिर 5 साल और 7 साल, और बगैर सेंटर के मदद से पंजाब नहीं चल सकेगा। तो जरूरी है फाइनेंशियल जरूरत है हमारे तहत। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम एक साथ होके एक गवर्नमेंट बने। मेरा संबंध अपने हल्के जलालाबाद ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਗੀ। Now, ahead of the upcoming polls, Election Commission has now held a review meeting on rallies and roadshow ban. The Election Commission has extended a ban on rallies and roadshows, padyatras, until the 11th of February. However, the poll panel has also relaxed norms on the other hand for public gatherings, for indoor party meetings and door-to-door campaigns. 1,000 people are permitted to attend outdoor public gatherings, while only 500 people can now attend indoor party meets. But this is, of course, against the previous rule where only 300 were permitted earlier. Now 500 can attend indoor meetings. For door-to-door campaigns, from 10 members earlier, now the EC has said 20 people are permitted to accompany its leaders. All right, the Election Commission, you remember most of the
Rallies have already gone virtual. Election Commission now extending a ban on any kind of rallies or road shows, but have given permission for massive gatherings in terms of outdoor gatherings, 1,000 people permitted. Indoor gatherings or a meeting as such, 500 people permitted. So slight relaxation in those rules for political parties ahead of polls. All right.